Very good morning, children. So today we are going to study the lesson number 16 articles. So children, take out your grammar textbook. Lesson number 16 articles. Okay, so we'll begin. A horse is running. Akhil is eating an ice cream. Mr. Bora is carrying an umbrella. Anita is driving a car. The car is red. Okay, in the above sentences you can see some highlighted words, that is a and the. Okay, a and the are used before nouns. Okay, so they are called articles. Okay, so a and the are called articles. We use before nouns. Yes, a and हम कब यूज़ करते हैं? जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो. अब काउंटेबल और नाउन अनकाउंटेबल नाउन किसको बोलते हैं बेटा? जो काउंटेबल नाउन्स जो होते हैं, जो आइटम्स को हम काउंट कर सकते हैं, जैसे एप्पल्स है, ऑरेंजेस है, बुक्स है, उन सबको हम काउंट कर सकते हैं. येस, अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है बेटा? अनकाउंटेबल नाउन यानी कि सम ऑफ द आइटम्स विच कैन नॉट बी काउंटेड, लाइक वाटर, राइस, कर्ड. ओके, दीज ऑल थिंग्स वी कैन नॉट count. Okay, that they are called uncountable noun. So these topics you will study in your latest chapters. Okay, so first in this chapter we have to focus on the articles, that is a and the. When you have to use and how to use, I will explain you. Okay, here are the some instructions given. You can see we use a and the before nouns. They are called articles. We use a and an before singular nouns. Yes, singular countable nouns. Okay, we use a when the nouns begins with a consonant sound, a cow, a unicorn. Okay, we use an when the nouns begins with a vowel sound, an honest man, an apple. Okay, an कब यूज़ करेंगे? जब vowel sound होता है. an honest man, यहाँ पे h silent है. honest बोलेंगे हम. Okay, an honest man, an apple. Okay, if there are other words between the article and noun, look for the sound at the beginning of the word that comes after the article. If it is a consonant, use a. If it is a vowel, use an. So, a big fat elephant, an ugly building, an orange cap. So, अ और एन कब यूज़ करेंगे? यस, मैंने आपको बता दिया. अ कब यूज़ करेंगे? जब कंसोनेंट साउंड हो. और एन कब यूज़ करेंगे? जब वॉवल साउंड हो. ओके, सो द नेक्स्ट पेज गोज हियर. यस, हियर यू कैन सी द एक्सरसाइज ए. राइट अ और एन टू कंप्लीट द सेंटेंसेस. यस, अ और एन तो हमने समझ लिया. ओके, अभी मैं बाद में थोड़ी देर के बाद मैं द समझाऊंगी. ओके, नाउ एक्सरसाइज ए. लिली पुट डैश एग इन डैश पॉट ऑफ बॉइलिंग वाटर. एग है तो वॉवल साउंड है. ई है. यस, वॉवल साउंड कौन से बेटा? AEIOU. ओके, सो लिली पुट एन एग इन अ पॉट ऑफ बॉइलिंग वाटर. ओके, अ कब यूज़ होगा? जब कंसोनेंट साउंड हो. और जब वॉवल साउंड हो तो हम एन यूज़ करेंगे. वी सॉ अ ज़ेब्रा एंड एन elephant at the zoo. My father baked a chocolate cake for us. Sunny helped an old man carrying his bags. Pankaj is an honest boy. यहाँ पे honest जो आपको दिख रहा है HONEST, ये यहाँ पे H साइलेंट है तो हम बोलेंगे honest. ओके, तो O है तो वॉवल साउंड है तो हम एन यूज़ करेंगे. ओके, Limma lives in an igloo. An igloo. An old woman baked a big pancake. Ritu said, "Please give me a plate and a spoon." Okay, these are the exercise A. Now we'll come to the instructions of how to use the, when to use. Okay, we use the with a noun that we have already spoken about once. I saw a black car. The car was empty. The is also used before the names of river, holy books and famous buildings. The Yamuna, the Quran. We also say the earth, the sky, the moon, the sun. Okay, ये the कब यूज़ करोगे बेटा? जब जो चीज़ हम ऑलरेडी बोल चुके हैं, we already spoke about, we use the.
Okay, we use the before a noun which we already spoke earlier. Just I had an orange. I gave the orange to my friend. Okay, so the is also used for the famous places, buildings. We can use famous for the mountains, famous oceans, famous rivers, any some famous books. Okay, the is used for. Okay, the Yamuna, the Quran, the Ganga, the Pacific Ocean, the Red Fort, the Bible, the Economic Times. Yes, the is also used for the famous rivers, oceans, mountains, famous building, any famous places, or any famous books. Okay, the is also used. Okay, so we come to exercise B. You can see you have to use the correct articles before each of the following words and write them in the correct column. Okay, a and the. Okay, a car, an egg, the Gangas. Okay, a book, yes, a story, a vegetable आएगा, and के नीचे आएगा an egg, और क्या आ सकता है and में आइसक्रीम आएगा. Yes, vowel sound है, orange है, o vowel sound, an apple, the Ganga, the famous book, the Bible, the Kaveri, the Mahabharata. Yes, इन सब particular word में उसको हम the use करेंगे. Okay, now come to next page. Yes, fill in the blanks with a, an, or the. Dash peacock is dancing in my garden. The peacock is dancing in my garden. Raja eats dash egg every day, an egg every day. The earth goes around the sun. There is a blue clock in my classroom. A boy is going to the zoo. The boy has a bag. यानी कि इसमें द यूज़ होगा, फर्स्ट में अ यूज़ होगा, फिर द यूज़ होगा. द क्यों यूज़ होगा? क्योंकि यहाँ पे हम बॉय के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं. So the boy has a bag. The famous Taj Mahal, you all know. Yes, the Taj Mahal is made of white marble. There is a telephone. There is a telephone in Mr. Shinde's room. The telephone is ringing. Okay, Sarita bought a multicolored umbrella from the shop. So, okay, write this all, fill in the blanks, fill it in this English grammar textbook. Okay, now comes the last exercise. Take the sentences in which the articles are used correctly. Which are the articles are being used correctly? We have to take it. Okay, so first one, I packed an sandwich and a apple for lunch. No, this is the wrong. I packed a sandwich आएगा and an apple आएगा. Okay, apple a vowel sound है, so an apple use होगा, और s क्या consonant sound है तो a use होगा. Okay, second option is the correct one. Rohit bought a red shirt and Ronnie bought a blue one. So Rohit bought an red shirt and Ronnie bought an blue one. Okay, so which is one the correct? Rohit bought a red shirt and Ronnie bought a blue one. First option. A octopus is hiding under a rock in the sea. An octopus is hiding under a rock in the sea. So an आएगा. An octopus is hiding under a rock in the sea. Akhil bought an ice cream and Sonali bought a mango bar. Akhil bought an ice cream and Sonali bought a mango bar. Ice cream है या एप्पल है, इन सब के साथ हम एन यूज करेंगे. वॉवल साउंड होता है इसके लिए. ओके, सो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन. तमन्ना wants to be a astronaut. Tamanna wants to be an astronaut. So an astronaut आएगा. Okay, so this chapter is completed. So children, go through once again. I will tell you. So lesson number 16 about the articles a and the. कब यूज़ होगा बेटा? अ और एन हमें कब यूज़ करना है? बिफोर नाउन्स यूज़ करना है. दे आर कॉल्ड आर्टिकल्स. वी यूज़ अ एंड बिफोर सिंगुलर नाउन्स. वी यूज़ अ व्हेन द नाउन बिगिंस विद द कंसोनेंट साउंड. ओके, अ काउ, अ यूनिकॉर्न. ओके, वी यूज़ एंड व्हेन द नाउन्स बिगिंस विद द वॉवल साउंड होता है. एंड हॉनेस्ट मैन एंड एप्पल. Okay, if there are other words between the articles and the nouns, look for the sound at the beginning of the word.
बिगिनिंग ऑफ द वर्ड में किसका साउंड है वो आपको देखना है आफ्टर द आर्टिकल. इफ इट इज़ अ कंसोनेंट यूज अ यूज़ करना है और वोवल हो तो हमें एन यूज़ करना है. ओके चिल्ड्रन, I hope you all have understood this whole chapter. So please complete this whole chapter in your English grammar textbook. Okay.